जय, सिया भज रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगदम्बिका माता की जय, श्री गंगा मैया की जय, भवानी शंकर भगवान जय। की। ओम गं गणेशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चाधार्यमां देवीं पवित्रं कुरुक्षासनं वामे गुरुभ्यो नमः। पवित्रीकरणम्। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सविदुर्वा प्रसवो नमस्त्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्मिभिः दशदे पवित्रपदे पवित्रभूतसजत्कामः पुनेतच्छकेयम् ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाह्यभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्षपुनातोः पुण्डरीकाक्षपुनातोः पुण्डरीकाक्षपुनातोः। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। Wash your hands. Wash your hands. No. Wash your hands. हाथ धो। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि श्री गोविंदाय नमः। 3 बार। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः। नहीं 3 बार। माधवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि श्री गोविंदाय नमः। वाटर लेफ्ट हैंड में, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में थोड़ा सा जल। हाथ धो पंडित जी। wash your hands. केशवाय नमः। Sabrina, wash your hands. No, this one. केशवाय नमः स्वाहा। माधवाय नमः। नारायणाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः। ओम हस्तौ प्रक्षालनम् ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। लेफ्ट हैंड में वाटर। ओम केसर समानता। वांग में आसियस्तु। ओम नसो में प्राणवस्तु। आइज। ओम अक्षुर में चक्षुरस्तु। ears। कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु। shoulders। बाहोर में बलमस्तु। knees। ओम उर्वो में ओजवस्तु। ओम अरिष्ठानि में अंगानि तनुस्तनवा में सह सन्तु। ऋतं च सत्यं च विधातपसो वध्यजायत। ओम आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्रना तिलकान्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। दारा put your hand there. ओम नहीं पंडित जी give him. आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्रना तिलकान्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वृक्षस्थले कौस्तुभां नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिश्चन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। तिलकं दीपं दीपक प्रज्वलिता। ओम शुभं भवतु कल्याणम् आयुरारोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनम् दीपो मे हरतो पापो प्रत्यक्ष दीपज्योतिर्नमोस्तुते। Put your hands over the diya. शुभं भवतु कल्याण भवतु मंगलं भवतु दीपस्वरूपिणे नमः।
गंधर्वधूपम धूरसी धूर्वधूर्वन्दं धूर्वदिदं यस्मान् धुर्वदिदं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानामसि वह्निदमगों सस्निदमां वप्रितमां जुष्टतमां देवहूतमां वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् संकल्पं take palm leaf, akshata, supari, durva, dakshina, palm leaf ke tip. Lakshmi, just come out. Om. Now we do sankalp. Put the coin inside. एक सुपारी चाहिए पंडित जी संकल्प के लिए. All right, we do sankalp now. We give thanks to Bhagwan. Sankalp is our resolution or a vow to ask Bhagwan's blessings and to focus our mind on the Lord. Today today is Shraavan Somwar and today is Amavasya as well. Today we ask and pray that may Bhagwan Shivji bless all our ancestors, Hamara Pitro ki Ashirvad. We ask for all our ancestors, may their Atma attain Mukti, and also for all of you here, may you always stay connected to your dear ones, and may Bhagwan's blessings be with all of you. Our Shrotas in-house today, Tara and Lakshmi and their family, and of course Shekhar and Samantha, and Charandat, their son. Today they're celebrating their second wedding anniversary, so Bhagwan's blessings on them as well. Om Hari Om Tat Satom Vishnu 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 Nama Paramatmane Shri Purana Purushottamaya Shri Parameshwaragyaya Adya Brahmane Dvide Paradhe Shri Shvedvaraha Kalpe Vaivasvatmadavantare Ashta Vinashatitame Kali Yuge Kalipatam Charne Jambudvipe Uttreyamarka Khande Kannada Deshe Brahmtan Nagare Bhavani Shankara Mandare आर्याव्रतां तरगता ब्रह्माव्रते गदेसे विक्रमशके बौधावतारे वर्धमाने यथानाम श्री शुभ संवत 2080 श्री नलनामाब्दः संवत्सरे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे सोमवासरे अमावस्य तिथौयां पुनर्वसु नक्षत्रः हर्षन् योगः नागवकरण रवि दक्षिणायने एवं गुण विशेषणा विशिष्टायां शुभ पुण्यादिने सकल श्रुति स्मृति पौराणोक्तः फल प्राप्ति कामं आमुकुनां यजमानस्य ब्रजभूषण नामधेयस्य धर्मपत्नी सहित नाम निर्मला नामधेयस्य ज्येष्ठ पुत्री नामधेयस्य हिमानी नामधेयस्य पुत्री निर्वाणी नामधेयस्य ओमा नामधेयस्य नीलदेई नामधेयस्य केशर नामधेयस्य केशरदत्त नामधेयस्य समन्त नामधेयस्य चरन्दत्त नामधेयस्य सपरिवारनाम अमुक गोत्र मुख शर्माहं ममात्मना सपुत्र बान्धवस्य गणपति भगवान पूजनम कलस्थापना वरुण देवता सर्वदेव पूजनम करिष्ये श्रावण सोमवार पूजनम रुद्र अभिषेकम अस्य श्री सर्वदेव नमस्कारम सर्वदेव पूजनम पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य
Svridhyatam navagrahamakena yache iti sankalpam jajagrito Duramudeti daivan tadasadasadadhaivaiti durangamanjyotikhanjyotirekantan me manaha Shiva sankalpamastu astu Shiva sankalpamastu. Swasti Vachanam. We chant Swasti Vachana now for auspiciousness, that our minds be saturated with all that is divine. Akshat, Pandiji, Akshat, Hath me Akshat. Anil, you go sit down next to Pandiji there and just help him with our style of things. Om Pandiji, आप गा सकते हैं स्वस्ति वाचन. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधीषुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्धु मह्यं विष्णोरराटमसि विष्णोः स्वप्नेस्त्रो विष्णोः शौरसि विष्णौ ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्यदेवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सविदुर्निरतानि पराशुभा यद्भद्रं धन्न आशुभा इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वां पुष्टाङ्ग्रामे अस्मिन्ननादुरं वा एतते देव सवितार्यज्ञप्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मावः मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्दनोतरिष्टं यज्ञगं समिमन्दधातु ॐ विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितां भवति. हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधाम नमो गणेभ्यो गणपतिव्यसभो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिव्यसभो नमो नमो ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिव्यसभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यसभो नमः. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. ॐ सुमुखरक्षैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकलम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो
बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यपडे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थं पूजितो यसुरासुरै सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इति स्वस्ति वचनम्। Om Gam Ganapataye Namaha. Take flowers now. Invoke the presence of Bhagwan Ganesha. Always his first puja to be done. Gam Ganeshaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodaya. Mahaganapataye Namaha Dhyanam Samarpayami Namaha Gam Akshata. Om Gam Ganapataye Namaha Avahanam Samarpayami Namaha Gam Akshat. Om Gam Ganapataye Namaha Asanam Samarpayami Namaha Gam Padhyam. Om Gam Ganapataye Namaha Padhayo Padhayami Namaha Gam. Om Gam Ganapataye Namaha Arghayo Arghayami Namaha Gam. Take the brass lota. Om Gam Ganapataye Namah Achmanyam Samarpayami Namaha Gum. Om Gam Ganapataye Namah Sarvange Snanyam Jalam Samarpayami. Panchamritamaya Nitam Payodadhigritam Madhu Sharkara Samayuktam Snanartham Pratigrehatam Paya Pratabhyam Paya Oghadisho Payo Divyantarikshe Payodha Payaswati Pradisha Santu Mahiyam Payasnanam Samarpayami. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Snanam Jadubhyam Samarpayami. Vastrayugala Yagyopavitidharayami Namaha Gam. Vastrayagyopavitam Samarpayami Namaha Gam. Om Navabhisantu Vidyuktam Trigunam Devatamayam Upavitam Chotaryam Grahana Parameshwara Yagyopavitidharayami Namaha Gam. Jaldi karo na. Om Yagyopavitam. Om Vastramupavastram Gandham Dharayami Gandhadvaram Duradarsha Nityapushtam Karishanim Ishwarigam Sarvabhutanam Tamiho Bhagvaye Sriyam Gandham Akshatam Samarpayami Namaha Gam. Akshatascha Surasrishta. और दे दो पंडित जी, और दे दो सभी सभी. Om Durvam Cha Samarpayami Namaha Gam. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. दुर्वा हाथ में लेकर और अर्चना. बिल्व पत्रम समर्पयामि नमः. नमो विल्मिने जगवचिने च नमो वर्मिणे जवरुधिने च नमः. श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च. Om. Now we do archana. Durva hai? So we ask Bhagwan Ganesha's blessing. Om Sumukhaye Namaha. Om Ekadantaye Namaha. Om Kapilaye Namaha. Om Gajakarnakaye Om Lambodaraye Namaha. Om Vikataye Namaha. Om Vignarajaye Namaha. Om Vinayakaye Namaha. Om Dhumraketave Namaha. Om Ganadhyakshaye Namaha. Om Balachandraye Namaha. Om Gajananaye Namaha. Om Vakratundaye Namaha. Om Shurpakarnaye Namaha. Om Herambaye Namaha. Om Skandapurvajaye Namaha. Om Siddhilambodar Mahaganapaते Namaha. Durvam Archanam Pushpam Samarpayami Namaha Gam. Agarbatti धूपमाग्रापयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा गृह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. धूपमाग्रापयामि नमः.
दीपं दर्शयामि नमः ॐ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायतं दीपं दर्शयामि नैवेदयामि नमः ॐ धूपदीपनिवारणाय नमः नैवेद्यं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेदयामि नमः ॐ गं गणपतये नमः आचमनीयं समर्पयामि नमः ॐ गं गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि भुविफलं महादिव्यं नागबलिदलयुतं एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीताम् ताम्बूलफलं चतुभ्यं समर्पयामि नमः ताम्बूलफलं दक्षिणां चतुभ्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासेद सदाधारं कस्मै देवाय हविषां विधेमः दक्षिणां चतुभ्यं समर्पयामि नमः ॐ गं गणपतये नमः कर्पूरनिराजनं ज्योतिः कदलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूरां च प्रदीपितम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवम् महागणपतये नमः कर्पूरनिराजनं ज्योतिः ॐ गं गणपतये नमः प्रार्थना सभी ॐ प्रार्थनां जरुभ्यं नमः महागणपते नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं यदायुः गं गणपतये नमः ॐ नं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानवशिष्याम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तजायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्रैलैवश्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रास्त्वम् इन्द्रास्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं चन्द्रमास्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादीन् पूर्वमुच्चार्य व्रणदिस्तदनन्तरम् अनुस्वर परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारपूर्वं रूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्यान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सहसा गणेश विद्या गणकरीसे नित्रिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः ॐ ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत् ॐ एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशमधारिणं रथं च वरदं हस्त्रे बिभ्राणमुशकध्वजां रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससां रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषु पूजितं
पूजितां भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युताम् आविर्भूतां च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् पराम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वराः नमो प्राप्तपदये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इति पूजनं करिष्ये नमः। बोले गणपति भगवान की जय। अनेन पूजनेन श्री गणपति देवता प्रियंताम नमः। बोलिए गणपति भगवान की, गौरी मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। All right, put hand on the kalash now. Put your hand on the coconut on top. कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रासमासिताः मूले तस्यासदे ब्रह्मा मध्ये मातृगणस्मृताः कोक्षौ सुसागरा सर्वसप्तदीपवसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वणा अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता। ॐ वं वरुणाय नमः ध्यानं समर्पयामि। अक्षत सुसम अक्षत। ॐ गं गणपतये नमः ध्यानं समर्पयामि। अगेन ॐ गं गणपतये नमः आवाहनं समर्पयामि। एक बार और ॐ गं गणपतये नमः आसनं समर्पयामि। Throw water 4 times. पाद्यं समर्पयामि नमः। ॐ वं वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। 1 spoon milk। ॐ पंचामृत महास्नानं समर्पयामि नमः। गं गणपतये नमः। मानस्तो केतनये मानो आयशो मानो घोषो मानो अश्वे घोरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधिरः विक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं धारयामि नमः। त्वं चन्दनं कुङ्कुमम् आजिग्रहकलशं मह्या त्वादिशन्तिं दया पुनरुजानि वर्तस्वसानु शस्त्रं तुक्षोरुधारां पयस्वती पुनर्मावशिता गंधमक्षताम्। और फूल बढ़िया। अर्चनां वं वरुणाय प्रथिते स्वरूपिणे नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। अर्चना। Take flowers now. Do Varun Archana. ॐ वं वरुणाय नमः। ॐ वं प्रचेदसे नमः। ॐ वं स्वरूपिणे नमः। ॐ वं अपाम्पतये नमः। ॐ वं जलाधिपतये नमः। ॐ वं पाशहस्ताय नमः। ॐ वं तीर्थराजाय नमः। ॐ वं करमणिभूषणाय नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। ॐ ऋग्वेदाय नमः। ॐ यजुर्वेदाय नमः। सामवेदाय नमः। अथर्ववेदाय नमः। इतिहासाय नमः। ॐ पुराणाय नमः। वेदव्यासाय नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। इति मन्त्रेण पुष्पं समर्पयामि नमः। धूपमाग्रापयामि। धूरसी धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं ज्योत्स्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः। देवानां शिवनितमघोंसस्नितमां वप्रितमां जुष्टतमां देवहूतमां वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातचोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। नैवेद्यं समर्पयामि नमः। ॐ धूपदीपनिवारणाय नमः। ॐ वं वरुणाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। वं वरुणाय नमः। ॐ नैवेद्यमाचमनीयं समर्पयामि नमः। वं वरुणाय नमः।
आचमन्यं ताम्बूलं समर्पयामि नमः गुं दक्षिणां च तुभ्यं समर्पयामि नमः गुं वरुणाय नमः हिरण्यगर्भगर्वस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्दपुण्याफलदामता शान्तिं प्रयक्ष मे ॐ वं वरुणाय नमः ताम्बूलफलं दक्षिणां च तुभ्यं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं ज्योतिः करलीगर्भादिसम्भूतं कर्पूरां च प्रदीपितम् आरातिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवम् ॐ वं वरुणाय नमः कर्पूरनीराजनं समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि नमः वं वरुणाय नमः। बोले वरुण भगवान की जय। प्रार्थना, put your hand on the coconut if you can. ॐ दानव संवादे मध्यमाने महोददौ उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयं तत्त्व ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणप्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यवसुभो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत् कामफलप्रदा त्वत्प्रसादान्विमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते वं वरुणाय अपां पतये सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमो नमः। बोले वरुण भगवान की जय। अनेन पूजनेन श्री वरुण देवता प्रियन्तां नमः। बोले शंकर भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 हम। अच्छा चलिए हेलो सर कभी का माइक पंडित जी यू विल गिव देम आप दे दीजिए। नो 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 बहन जी पंडित जी इससे साफ कर दो। हाँ फर्स्ट शिव जी भगवान पार्वती ध्यान। एवरीबॉडी प्लीज कम दिस वे। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो भवानी शंकर भगवान की। बोले उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। सियाभज रामचंद्र की। वृंदावन बिहारी लाल की। Everybody clasp your hands and pray. It's a very important day today. Shraavan Somar, and it's also Amavasya. Bhagwan's blessings to all of you. Your various pitris and so on. Om Bande Devam Umapatim Suragurum Bande Jagatkaranam Vande Pannagabhushanam Mrigadharam Vande Pashunam Patim Bande Surya Shashankavan Nayanam Bande Mukunda Priyam Bande Bhakta Janashrayancha Vardam
वन्दे शिवं शङ्करम् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धव शिवभक्तस्य सर्वना भुवनेश्वर काठके सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः महागणपते नमः भवानी शंकर शिवाय नमः ध्यानं समर्पयामि नमः बोले श्री उमापति महादेव की जय अन्नपूर्ण पार्वती माता की जय एक थोड़ा एक लोटा नहीं ये शिवलिंगम के लिए ये शिवलिंगम ओम पाधयो पाधयामि नमः हस्तयो हस्तयामि नमः ओम मुखे आचमन्यं समर्पयामि नमः ओम सांब सदा शिवाय नमः ओम who's blowing shank? Anybody have shank? ओम भवानी शंकर वन्दे सुधा विश्वास्य रूपिणो ओम सांब सदा शिवाय नमः नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हर 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 महादेवाय नमः ओम विद्युद्ध्याम समप्रभाम मृगपतिं स्कन्दस्ततामभीषणां कन्याभीकरवालकेतविलसद्धस्ता विरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिकेतविशिखं चापं कुनं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे ॐ भवानी शंकर शिवाय नमः ॐ गंधं धारयामि नमः ॐ गंधं धारयामि नमः ॐ दीपं दर्शयामि नमः ॐ चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत धूपदीपनिवारणाय नमः ॐ दीपं दर्शयामि नमः भवानी शंकर शिवाय नमः दीपं दर्शयामि नमः ॐ हम भवानी शंकर शिवाय नमः अन्नपूर्णाम्बिका माता दिव्ये नमः श्रीकाटिके सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः अस्य श्री महागणपतये नमः ॐ हरि ओम शंभवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः कालाभ्राभ्रां कटाक्षैरधिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां
शङ्खं चक्रं कृपानं दृशिकमपि करे रोद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहास्कन्धाधिरुदां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवृतां सिद्धिकामे ॐ अन्नपूर्णदिव्ये नमः कार्तिकेयसुब्रह्मण्यस्वामिने नमः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतानो शृण्वन्नोतिभिः सीधसाधनं महागणपतये नमः दीपं दर्शयामि नमः हर 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 महादेवेभ्यो नमः दीपं दर्शयामि नमः ॐ नमः शिवाय 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 भवानी शंकर भगवान की जय ॐ संभवे नमः ध्यानं समर्पयामि नमः आवाहनम् Sita, bring the flower thali, the thali flower. Dhyanam samarpayami namahagam tatpurushaya vidmahe mahadevaya dhimahi तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ध्यानं समर्पयामि नमःगं आवाहनं समर्पयामि नमःगं आसनं समर्पयामि नमःगं ॐ सांब सदाशिवाय नमः ध्यानमावाहनम् आसनं शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च ध्यानं समर्पये आवाहनम् आसनं पाद्यम् उष्णोरकं निर्मलं च सर्वसौगन्धसंयुक्तं पारप्रक्षालनार्थाय. Can somebody please ring the bell and somebody please blow the shell and somebody please knock the gharyal. Thank you. पाद्यम् अर्घयं समर्पयामि नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय पाद्यम् अर्घयं समर्पयामि नमः ॐ पाधयोपाधयामि उष्णोरकं निर्मलं च सर्वसौगन्धसंयुक्तं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृहतां पाधयोपाधयामि अर्घयो अर्घयामि नमः आचमन्यम् 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 आचमन्यं समर्पयामि नमः सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् आचम्यतां मया दत्तं गृहाण परमेश्वर आचमन्यं समर्पयामि सांब सदाशिवाय नमः आचमन्यं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः. This one you got to hold like this and throw the water on. Hold it to your left hand
Also left hand. Om Sarvange Snanam Samarpayami Namaha. Om Shambhave Namaha. Snanam Chatubhyam Samarpayami Namaha. Om. उसके बाद पंचाम घी. ओम संभवे नमः. स्नानं चतुभ्यं समर्पयामि नमः. ओम नमः शिवाय. 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 मधुवाता ओम पया पृथिव्यां पय ओषधीशो पयो दिव्यं पयोधाः पयस्वती प्रदिशा. पयस्नानं समर्पयामि. घृतस्नानं समर्पयामि नमः. घृत्पङ्कः विश्यानां पायसंसासर्करं नानाविदंश नैवेद्यं. ॐ दधिस्नानं मधुस्नानं मधुक्षरन्ति सिन्धवां माधवेर्ना सन्तोषधे. मधुस्नानम्. ओम अस्य श्री सांब सदाशिवाय नमः. ओम शर्करस्नानं समर्पयामि नमः. पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि नमः. पंचामृतमयानीतं. This you can wash it, you can just throw it. समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहतां पंचामृतमहास्नानं समर्पयामि नमः. ओम नारियल फलं चतुभ्यं समर्पयामि नमः. ओम नमः शिवाय. 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 ओम can use some coconut water. ओम संभवे नमः. सांब सदाशिवाय नमः. शङ्केन्दवाभं देवसुन्दरतनुं शार्दूलशर्माम्बरं कालभ्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्खप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमुनं कल्याणकल्पतरुं नौमिध्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददातिं सतां शम्भो कैवल्यपि दुर्लभं कलानं धन्द्रकृध्यो वसो श्रीशङ्कर शन्तनोत मे. बोलियो उमापति महादेव की. Everybody make a line. Everybody make a nice line. We're going to start the Abhishekam ceremony now. Om Shambhave Namaha. Om. Panaji, ये सब उठाओ. नहीं ये बोलो उमापति महादेव की जय. ओम नमो भगवते रुद्राय. ओम नमस्ते. याते इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः. शिवाशरव्या यातवतया नो रुद्रमृदय. याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी. यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत
शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अध्यवोचदधिवक्तां प्रथमो देव्योऽभिषक अहीगस्य सर्वान् चम्पयत्सर्वा आचयात् धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुसु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रुताहं सहस्रशो वैशाखं हेदयीमहे असो यो सर्पति लीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अत्रिशन्नत्रिशन्वदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीधुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः पर्मञ्च धन्दनस्तमभयोराग्नियोज्या याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवोऽप अवतत्कदृस्वागं सहस्राक्षाश्रेषुरे निशीर्षल्यानामुखा शिवो नः समना भव विज्जं धनुः मानवागमुत अनीशन्नस्य हि तव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मिर्धृष्टं हस्ते बभूव देदनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्वायुधाय नाथदाय दृष्टवे उभाभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेतां सम्भवे नमः ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तिकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय कृषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्यादिनीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः भूताय हन्ताय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रनेवानिजाय कक्षानां पतये नमो नमो पवन्तये वारिवस्त्रतायोषधीनां पतये नमो नमः उच्चैरघोषाय कृन्दयते पथीनां पतये नमो नमः विश्ववीताय धावते सत्वरां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याजन आव्याजनीनां पतये नमो नमः ऋकुबाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गन इषुदेवते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निषेरवे परिचराय रण्यानां पतये नमो नमः जगागुं सद्भ्यो मुष्यतां पतये नमो नमो असिमद्भ्यो नक्तं शरभ्यः प्रहिंसानां पतये नमो नमः उष्णीशने गिरिचराय कुरुंसानां पतये नमो नमः ऋषिमद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चद्भ्यो वृषजद्भ्यश्च वो नमो नमः स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यो जागृद्भ्यश्च वो नमो नमः सश्यद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याजिनीभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यस्त्रिवं हरिभ्यश्च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रतेभ्यश्च वो नमो नमो व्रतेभ्यो व्रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः श्रुतभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमः लक्षभ्यो व्रतकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जेष्टेभ्यो निशारेभ्यश्च वो नमो नमः शिशुभ्यो धन्वाकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः शुनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च
वर्ष्याय च नमो वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इंद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वासव्याय च वास्तुकाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः कंकाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः साराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च
हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरा अयं मे विश्वभे एषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्योमर्त्याय हन्तरे तान यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्योर्मे पाहि प्राणानां गन्धवती रुद्रो मा विशान्तकः तेनानेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्योर्मे पाहि सदा शिवो शान्ति शान्तिः हरि ओम् अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नेर्वाजेभिरागतं वाजश्च मे प्रियतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे प्रीतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे महश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे सर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वसश्च मे द्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुगं च मे स्वपथं च मे रुद्धं च मे रिद्धिश्च मे When you're finishing this Abhishekam, you can sit down now. When you finish a haldi, you can sit down afterwards. मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे श्रीरञ्च मे मयश्च मरतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे च मे सून्द्रता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सद्दिश्च पीतपेतश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रयश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवा आश मे माशा आश मे तिला आश मे मुद्गाश मे खल्वा आश मे गोधूमा आश मे मसुरा आश मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाका आश मे नेवारा आश मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिगताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे तपश्च मे श्यामञ्च मे लौहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्णपच्छञ्च मे कृष्णपच्छञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे
अगुंसश्च मे रश्मिंश्च मेदाभ्यश्च मेधिपतिश्च म उपागुंसश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे स्विकश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतग्रहाश्च मेऽतिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाट्नीवत्तश्च मे हार्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे विद्धिश्च मे धिष्णियाश्च मे स्रजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावानश्च मे स्वरवश्च म उपर्वाश्च मे धिषवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनेयश्च म आग्नेयेधरञ्च मे अविद्धानञ्च मे ग्रहाश्च मे सदश्च मे पुरोडासाश्च मे पचताश्च मे बभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मेर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे ऋतिश्च मे शक्वरीलङ्गुलज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतश्च मे वृतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रिभिश्च मे त्रिवीर्च मे दित्यवाश्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवा च मे तुर्यौही च मे पष्ठवा च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वसा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मे नड्वां च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतात् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वा यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे नवविगुं पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे ष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे ष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिचश्च कृतश्च शुभश्च मूर्धा च व्यस्तियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ इडा देवहुर्मनुर्यज्ञने बृहस्पतिरुत्थामदाने सगुंसि सद्विश्वे देवासोक्तवाच पृथिवी मातर्मा माहि गुंसि मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमत्यासगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाये पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति 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 ॐ नमः शिवाय शेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि पादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽत्वा उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनावशने अभि तस्माद्विराजजायत विराजो अधिपुरुषः सज्जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिम् चैन हविषा देवा यज्ञवतन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं चातमकृतः तेन देवा अयजन्त
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगश्चागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याशये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो जग्निरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य को बाहू कावो रूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत च मामनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादन्तश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोभ्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्त्यादमुदा चहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशस्ततस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृतगिह भवति नान्यः पन्थाय अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रमाण्यासनः ते हनाकं महिमासना सतन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्तिरेवाः अभ्यः सम्भूतपृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतगिह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं मरीचीना पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीष्यते लक्ष्मी सपत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणां सर्वं मनीषाणाम् ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शिवाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सत्यो जातं प्रबध्यामि सत्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नमे भवे भवस्वमा भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमो सर्वभूतमदनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकाय पतये उमापतये पशुपतये नमो नमः मिति
Rudrabhishekam. Bole Shankar Bhagwan ki Jai. We've just completed the entire Rudrabhishekam, the Chamakam and the Namakam. Very auspicious. You should be talking, should be sitting down chanting mantra. But this is how beautiful this chanting is when you chant and the energy is so high, it really goes in your soul, you know. And I always explain it like this, that back home in Guyana, you don't remember planting so many tulsi plants in your yard. I don't know about you, but you see how many of them grow all over the place. You didn't plant it, but because there was a tulsi plant there, and the wind would blow gently and nicely across, the seeds will flow in the earth, and then what happens? Presence of tulsi comes up. Intentionally, it was not done by anybody, and this is how Rudram is. So you chant the Rudram, you may not know what's going on, but the seeds of divinity is growing inside of you. That's why it's important to be still, to be attentive, and to absorb everything that's going on. Bole Shankar Bhagwan ki Jai. Namah Parvati Pataye. Mahadeva Shambho. We will do a little Abhishek, little Alankar now. Please stay where you are and just chant in your mind Om Namah Shivaya all the time. We'll have a few Kirtan now while this is happening. Om Mahadevibhyo Namaha Sambhave. Murti और उसके बाद सब Shankar Shankar Sada Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva, Sada Shiva Sambh Shiva, Sada Shiva Sambh Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva, Sada Shiva Sambh Shiva, Sada Shiva Sambh Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva. Amba Saita Sambh Shiva, Amba Saita Sambh Shiva, Sambh Shiva hai Sada Shiva, Sambh Shiva hai Sada Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva, Sada Shiva hai Sambh Shiva, Sada Shiva hai Sambh Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva, Shankar Shankar Sada Shiva. Amba Saita Sambh Shiva, Amba Saita Sambh Shiva, Sambh Shiva hai Sada Shiva, Sambh Shiva hai Sada Shiva,
शिव शंकर शंकर सदा शिव शंकर शंकर सदा शिव शंकर शंकर सदा शिव. Bolo bolo sama bolo namah Shivaya. Bolo bolo sama bolo Om namah Shivaya. Om namah Shivaya. Om namah Shivaya. Bolo bolo sama bolo Om namah Shivaya. Yutu jana mein Gangadhari Trishooladhari Dhammarupachari Dhamma 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 Dhammarupachari Guja Udar Om namah Shivaya Guja Udar Om namah Shivaya
गणपति महादेव की जय। Shivji Chalisa. This evening we'll sing Shivji Chalisa and Rudrashtakam before the Alankar is finished. D. जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भालचंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग कलीके अंग गौर सिर गंग बहाई मुंड माल तन छाल लगाए वस्त्र काल बाहंबर सोहे छवि को देख नाग
विनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे भ्रम जन है मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु अब संकट भारी निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई स्तुति के विधि करहु तुम्हारी क्षमहु रात अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण वेद विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पारन पाया यह पार करिए मन लाए तापर होत है शंभु सहाय प्रिया जो कोई हो अधिकारी बात करे सो पावन हारी पुत्रहीन इच्छा कर कोई निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई पंडित त्रयोदशी को लावे ज्ञान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन रहिता के रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में आवे हे अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरहु हमारी जानी सकल दुख हरहु हमारी जानी सकल दुख हरहु हमारी नित्य नेम कर प्रातहि पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मग सर छति है मंत्र त्रु सम्मत 64 ध्यान अस्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण उमापति महादेव की Akash, can you come a bit? My monitor is not working. Purna Keena Kalyan. The Shiva Chalisa is 40 verses to Bhagwan Shri Mahadev. And those who listen to it and those who chant it, then the full blessings of the Lord are always with you. Now we're going to chant the Rudrashtakam. These are chantings that our temple, they are familiar with. And of course you will all join with me. Rudrashtakam is a chanting to the Lord to appease the Rudra inside of all of us. Inside of everyone. Inside of everyone there is a creative force, there is a preserving force,
and there is a destructive force. Inside of everybody, we have creative energy and a creative mind. We want to create new things, and then when we create these things, we have to preserve it as well. And then after a time when it has to be demolished, we do exactly that. So creative, preserving, and the destructive force are present in every one of us. Now, what we should not let happen, don't allow the destructive force to take charge of you. Right? Since all of them are inside of us, don't let all of them don't let the destructive force take charge of you. If that what happens, or if that happens rather, then what will happen? You will find that you're destroying more than you're preserving and more than you're creating. Sometimes we find that all we can do is break. We break our focus, we break our mind, we break families, we break societies, we break things, we break work, we break relationships. When those things are happening, then Shivji Bhagavan is not the calming energy inside of you. We have to learn to calm that energy called Rudra inside of all of us. On August 7th, we'll be performing Ekadash Rudram. 11 times the Lord's name will be chanted in the form of the Rudram. Again and again and again. And why do we do that? Because as we leave our puja place or our temple and we go out in the world, we leave the calmness and we go to a sea, an ocean, where there are so many hurdles. We have to be calm at all times. Well, sometimes we're not going to be calm, but you must try to be calm in most times in order to accept what the world is giving to you. If we are not blessed by Shivji, if we have not calmed the energy inside of us, then what will happen? We will just respond to everything that is coming. That's why it's important. Prayers are very important, friends. Kirtan is important. All these things are important. But prayers are very, very important to help prepare us for what is there. Bole Shankar Bhagavan ki Jai. Varun, you can do everything here, man. You just fix it. Namami Shamishan, Namami Shamishan, Nirvana Rupam, Vibhum Vyapakam, Brahma Veda Swarupam, Vibhum Vyapakam Brahmaveda Swarupam, Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham, Chirakashva Sambhajeham, Chirakashva Sambhajeham, Nirakar Mokar Moolam Turiyam, Gira Jnana Bodhidhamisham Girisham, Karalam Mahakal Kalam Kripalam, Gunagar Sansaraparam Nadoham, Niragyan Sansaraparam Nadoham, Tusharadrishanka Shivaram Gambhiram, Manobhutakoti Prabhashi Shariram, Puranmolikalolini Charuganga, Rasadhalvadi Sudhante Bhujanga, Chalat Kundalam Bhrusunikam Prasannananam Neelakantham Dayaram,
गजाननं नीलकण्ठं दयालं विनादीशचर्माज्वलं मङ्गलवालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भागगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भागगम्यं जगत्पादकारी सदा सज्जनानन्दरामुरारी चिरानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावतुमानात्पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानरानं भजन्ति हलोके परे वानरानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं एव भोजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽव्यं जराजन्मदुःखो मृगालभ्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो ॐ नमः शिवाय 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 बोले शंकर भगवान की जय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम मनोबोधहं कारचित्तानिनाहं न चाश्रोतजिह्वे न चाग्राणनेत्रे मनोबोधहङ्कारचित्तानिनाहं न चाश्रोतजिह्वे न चाग्राणनेत्रे न चाव्योमभूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न चाप्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशं न वा पाणिपादं न चोपाशकाय चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो
न मे लोभ मोह मदो नैव मेनेव मात्सर्यभावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञम् अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदा पिता एव मैनेव माता न जन्म न बन्धुर्न न नित्यं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूप विभुर्त्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्नैव चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ओ शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं
Namah Shivaya, Om 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 Namah Shivaya. Oh Har 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 Mahadeva, Hare 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 Mahadeva. Har 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 Mahadeva, Hare 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 Mahadeva. Oh Har 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 Mahadeva, Hare 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 Mahadeva. Har 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 Mahadeva, Hare 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 Mahadeva. Oh Har 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 Mahadeva, Hare 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 Mahadeva. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Bolo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Everybody. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Bolo Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Bolo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Bolo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Bolo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.
शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो जय गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो जय गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो ओ हे शिव शंकर शशांक शेखर शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर शशांक शेखर शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो Clasp your hands and let me tell the Lord Atma Tvam Girija Mati Sahachara Prana Shariram Griha. Bhagwan, you are our Atma and Prana Shariram Griha. We are housing you in our body. That is why we pray, Bhagwan, that you keep our body energized, our minds pure, our intellect sharp, so that we can always do the best of our life. We will never be perfect, but we will do the best in our life to live a good life, a simple life, a life elevated, of course, above all lower form of creatures. Prabhu, every day that we pray, every word that we speak, it is our hope to get closer to you. Bhagwan's blessings on our Shrotas in person, Dharan, Lakshmi and family. And today, Kesar and his wife Samantha are celebrating their second wedding anniversary in front of Shiva and Parvati Bhagwan. Of course, the Lord has blessed them, has given them blessing in the form of a son, Charandat. Bhagwan's blessings on them for many, many lifetimes of happiness and bliss together. Let us pray. Om Atma Tvam Girijamati Sahachara Prana Shariram Griha Puja Te Vishayopabhogarchana Nidra Samadhistati Sanchar Padayo Pradakshan Vidhi Stotrani Sarva Giram Yajnat Karma Karomi Tattadakhilam Shambhotavaradhanam Karcharana Kritam Vakayajam Karmajam Va Sravananayana Jamba Manasam Va Paradham Vihitam Vihitam Va Sarvametakshamasva Jai Jai Karunabhe Shri Mahadeva Shambho Jai Jai Karunabhe Shri Mahadeva Shambho प्रेम से बोलो शंकर भगवान की भवानी माता की श्री भवानी शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो Please go back to your seats. Om Namah Shivaya
Om Namah Shivaya. 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 बोले शंकर भगवान की जय। Aditya, come. Bring this tambour for me closer. जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। Is there anybody who doesn't know this song? जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। Raise up your hands like this, everybody. Come on, this is going to heal your shoulder problem. It's going to ease your tension. It's going to ease all your back pain. Raise your hand up, हाथ उठाओ, पीछे वाले भी, और उसके बाद तालियां बजाओ। शंभु भगवान की जय। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। जय कैलाशपति शिव शंकर। हाँ, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हरे। जय भोला भंडारी। भंडारी। शिव हरे। जय भोला भंडारी। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय हो। निश दिन तेरा ध्यान करे हम। सिमरे मंत्र तिहारा। निश दिन तेरा ध्यान करे हम। सिमरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ। होवे घट
शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बढ़ाया। शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया। ओ युग युग से ये श्री श्रीनाथ ऐसा डमरू बजाया। युग युग से ये श्री श्रीनाथ ऐसा डमरू बजाया। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग ओ में, तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग ओ में। दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी। तेरी याद बुला के जग में, तेरी याद बुला के जग में दुख पावे संसारी। तेरी याद प्रभु, whoever thinks about you, whoever remembers you Shiva, dukh pave sansari. Then if for that moment that they remember you and they think about you, that moment their sorrows in life, their sorrows in life will not disappear. Don't think their sorrows will disappear, but that person will be free that moment from their sorrows. You all know that, my friends. If you have challenges in life, if you just think about it, what's going to happen? It's just going to make you more depressed and more sick. It's not going to take it away. It's just going to make you more depressed and more sick. There's a time for everything. There's a time for prayer. There's a time for joy. There is even a time to deal with sadness. And that is what this bhajan tells us, and the scriptures tells us, that when we are engaged in Shiva's work, in the Lord's seva, then life, of course, although it is filled with pebbles and thorns and everything else, we will get across this life very comfortably. This evening it's so nice to see all of you at our temple, at our second of eight Shraavan Somar. सोमवार का व्रत रखूं, भोले के मंदिर जाऊं. Somar Vrat is extremely important. Somar means Monday, Vrat means the fasting. Once there was a bunch of ladies, they were praying, and they always fast on Mondays. So they approached Parvati Mata and they said, Parvati Mata, एक रिक्वेस्ट है हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है ना, तो पार्वती माता से क्या वरदान चाहिए बताइए ना, क्या वरदान चाहिए? What blessing do you want? What can I give you? They say to Mata Parvati, सोमवार का व्रत रखूं, भोले के मंदिर जाऊं. Hey Parvati, we keep our Somar Vrat and we go to the mandir of Bholenath. शिव पिंडी के गंगा जल से मैं स्नान कराऊं. And we offer Ma Parvati, we offer Shiva Pindi, Ganga Jal se मैं स्नान कराऊं. We offer Ganga Jal on Shivji. बस इतना वर मांगू मैया पार्वती. Bas only one request we have, Mother Parvati. Can you grant us?
शिव सा भोला भाला मुझको मिले पति. Shiv sa bhola, please let Shivji become our husband. Can you imagine that? The ladies are praying to Ma Parvati and doing fasting for Shivji to bless them. This is how playful a bhakta's life is. A devotee is filled with so many childish behaviors that sometimes they want Bhagwan for themselves. This is the power of what we do here in your life, Somvar Vrat. And imagine if you extend that Vrat every day to Bhagwan, what happens. Today is Ekadashi. Today is a very, very powerful day, like every day. Amavasya, sorry. Right. Today is Amavasya. And it's a very powerful day for so many things, especially for our Pitris. We usually do this katha in my katha from the month-long katha, and we won't do it today, but I'll tell you the importance of this day. Today is a day when we pray for our Pitris, and we pray to Shiv Bhagwan that he bless the Atma, or he take care of the Atma of our Pitris, because he's Atmatvam. The crescent moon that we see there is Chandra Shekhar Bhagwan. I think the kids are going to sing a few verses of the Chandra Shekhar Ashtakam just now. But it's a beautiful day for us to fast and to do prayers to Bhagwan Shiv. We cannot be selfish in life. The very body that we enjoy, or the space that we enjoy in this life, they were all given to us by our dear ones. For those who have left us, they matter so much. For without their contribution, struggle, and commitment, we wouldn't be who we are today. Today, I would like all the children here especially to open your eyes and understand that one day, the very people who are caring for you may not be there forever, or will not be there. It does not mean that they are forgotten, or they should be forgotten. It means that you must continue to pray that their blessings be always upon you. So today is that day of Amavasya. Today is a very beautiful day for prayers to Shivji especially, Bhagwan Narayana. Today is a good day to give dan, to give some charity. There are Brahman Pandits in this temple. Please give them some dakshina before you go. It's very auspicious to give Brahman dakshina on today as well, and to get the blessings of all. I want to read a little katha to you this evening about Bhagwan Vaidyanath. Lord Shiva took so many forms. Saurastre Somanatham cha Sri Shaile Mallikarjunam Ujjayenyam Mahakalam Omkaram Mamaleshwaram Paralyam Vaidyanatham cha Dakinyam Bhima Shankaram Setu Bandhe Tu Ramesham Nagesham Darukavani Varanasyam Tu Vishvesham Trambakam Gautami Tate Himalaye Tu Kedaram Grishme Chancha Shivalaye Etani Jyotirlingani Sayam Pratha Pate Nara Sapta Janma Kritam Papam Smaranena Vinashyati. Dwadash Jyotirlingani. There are 12 Jyotirlingams of Bhagwan Shivji. Jyotirlingams means that they were not created by man, they were consecrated by Bhagwan himself. And one of those lingams is called Vaidyanath Bhagwan Lingam. How did this lingam come about? All of you know that there was a devotee of Bhagwan Shiv by the name of Shraavan. Shraavan was a great devotee, Shivji ka Mahan Bhakt tha. And one day, Shraavan, of course, he created this lingam, and he started his devotion to Bhagwan Shiva. Suta Uvacha, Mahashiv Puran ki katha, Ravano Raksasa Srishtum Mani Man Parayanah Aradha Haram Bhaktya Kailaso Parvato Tame Aradhita Kriyat Kalam Na Prasanno Haro Yada
Yada chanyat tapakshetre prasadartha Shivasya saha. He went of course to Kailash and he started to pray to Bhagwan Shivji. There's a reason why we have built beautiful temples. There's a reason why we go to Kailash. There is a reason why we go to so many places, because the environment that we live in is good. You pray there every day. Once a year you call Panditji to uplift the energies. You do your pujas and so on. It's nice. But we need a little bit more than that. We need to go in a space that supports our prayerful mind, that is calm enough, that will not allow your mind to dwindle and wander away on negative things. So we go to Tirtha, we come to the temple. A temple is a space that is preserved by auspicious chantings. And I cannot say so much more about our temple because that's what we do. Our Panditjis, and we have Panditji here, me and well, we all try our best to preserve the energy. So when you come, you can sit and enjoy the energy in this temple, any temple. For that reason, I've always said it and I continue to say it. In this space here, this is not a space to chit-chat. This is not a space to talk. Any serious temple, and I am very close to Vishnu Mandir, I am very close to Dr. Dove Pandit Bose. I can use them as an example because they are my teachers. They are my gurus. When you go there, they tell you, no talking in the temple. They don't have another nice way of saying it. Hello, no talking in the temple. You think that is because they're arrogant or because they're whatever? It is because the Panditjis, they spend so much time investing their time chanting mantras. You're not here in the evening, every 6 o'clock in the evening. Me and the two Panditjis are here. And we chant from 6 p.m. to 8 p.m. every evening. Stotrams, prathanas, bhajans, kirtans. Right? Why? To please Bholenath, he's always very happy. But we have to preserve the energies here. Now when you come and you start to, gossip, a little bit, chat a little bit, that energy comes and overtakes anything that is here. So we've always made the rule, don't talk in the temple. When prayers are done, you can say hi, hello, and go downstairs and you can do all of that. But temple is a place to socialize, it's a place to get together, but there's a time for everything. Ravan did not sit in his house and do puja. He went to Kailash to do puja to Bhagwan Shivji. He went to a place that supports his sadhana. And he sat. And when he could not please Bhagwan Shivji, because Shivji is difficult to please, but when he is pleased, oh, his blessed Ashirvad on you will be in abundance. Aradhita kriyat kalam na prasanno haro yada na prasanno. Shivji was not pleased by that. And so what Ravan did, he built a kund, the Havan kund. And then he performed tapasya on the southern peaks of the Himalayan. Bhumo gartam varam krutva tatragni sthavanam hidvija tat siddho shivam sthapya havanam cha chalahata. He started to perform havan. And when he was offering the samagri in the havan, Om Namah Shivaya Swaha, he chanted all the Vedic mantras. Ravan is a scholar. Ravan created Jata Tavi Galajwala Prabha Pavitasale Galeva Lambi Lambitam Bhujanga Tunga Malika Damad 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 Dinata Marvayam Chakar Chandra Tandavam Tanotuna Shiva Shivam. Ravan wrote the Tandav Stotram. He sang to Shivji. He's a demon, but he's no ignorant man. Pandit Shekharji sang Tandav very nicely here, by the way. I like Tandav's chanting, Panditji, very nice. I heard him chanting one day here. It's very nice to Shivji. You feel nice when you hear these things because this is what our Prabhu is used to. Our children know Tandav Stotram.
all of you should listen to it. It's very, very good for you. You won't understand the thing, but you'll enjoy the beat. Ravan started to do puja, itni sari puja. But as he was offering the Havan Samagri, what happens? Shivji was not pleased. The Lord was not coming. The Lord was not coming. And you know what he did? Ravan says, well, Mahadev, I will offer you Param Prasad. Param Prasad. Remember, I always told you, Duniya ne charhave phool tujhe, मैं खुद को चढ़ाने आया हूँ, है शिव तुम्हारे धूले पे, मैं खुद को चढ़ाने आया हूँ. As you offer your banana, you offer your prasadam, you offer your kheer, please don't never ever forget to offer yourself to the Lord. How do you offer yourself? You lose yourself in Mahadev. Lose yourself. Offer your life to Mahadev. Yesterday I spoke about this. When we wear the Rudraksh mala, you're putting that mala around you, and what you're doing? You're garlanding the Shivji in you. That's why Panditji wear Tulsi mala, he's Vaishnava. I wear Rudraksh mala, I'm Shaiva. Because he garlands the Narayana in him. I garland the Shiva and me. We wear Upanayan, Janavi Sanskar. Satogun, Rajogun, Tamagun, so that the thread will hopefully help us to control our gunas and reach the Lord. Offer yourself to Prabhu. Khud ko charhane aaya hu. When Ravan did the yajna and nothing was happening, Ravan says, Main khud ko charhane aaya hu. And Ravan took his sword. And you know his 10 heads that he had? The 10 heads represent his egos. Panch Karmendriya and Panch Jnanendriya. The 5 sense organs and the 5 action organs. That is what his 10 heads mean. Panch Jnanendriya or Panch Karmendriya. 5 sense organs and 5 action organs. When those are not controlled, it manifests as a demon. That is the symbolic representation of Ravana. The symbolic manifestation of his doshas and in his 10 heads. And what he did, he says, Prabhu, you're not going to come? I'm going to offer you the things that mean the most to me. He takes his sword and he starts to cut out his head one by one. He offers his first head into the fire. Ab tak Bhagwan Shiv nahi aaya. He offered his second head, his third head, his fourth, fifth, 6th, 7, 8, 9. 9 heads he offered into the fire, Ravan. And when Lord Shiva did not come, Shiransi Purva Kritvam Nirujani Tatha Prabhu Manoratam Dadho Tasme Chatulam Balamuttamam. What did he do? He is going to offer now his 10th head to Lord Shiva. And Bhagwan Mahadev says, no. If you offer this 10th head to me, well, the Lord didn't stand up there. The Lord probably, in the sky talking. That if you offer this 10th head to me, that would mean I'll have to give you anything that you want. And that's not going to happen. Bholenath Bhagwan appeared in front of Ravan. Bhole Bhagwan says, Ravan, kya chahiye aapko? Ravan says, Prabhu, I'm here, of course, to give you my bhakti, and I need your blessings. You know why Shivji as well did not allow Ravan to give his 10 head? Because Ram Bhagwan Narayana, remember, Ravan and Kumkaran are avtaras of Jay and Vijay. Ye Jay and Vijay ka avatar hai. Ravan, Kumkaran, Dantavak, Shishupal, and who else? Who else? The 3 lineage of demons. Ravan, Kumkaran, Dantavak, Shishupal, Pandit Suraj, Hiranyakashipu or Hiranyaksha. I know I can always count on you to help me remind stuff. I didn't forget, I just want to test you if you know. You know that. Pandit Anil, you know that? Okay. But you know because Pandit Suraj says so. Okay. All right. Dantavak, Shishupal, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, and Ravan Kumkaran, the 3
birth of demons that had to come for Narayan to destroy. Bhagwan Shiva says, Narayan has to come destroy you, not me. So Lord Shiva appeared. And Lord Shiva blessed him with a lingam. You know, he blessed him with a lingam, and he says, Ravan, this lingam, sarva kam pradam chaiva darshanat papaharanam, that whoever sees this lingam, they will, their sins, papanashanam, their sins will be burnt away. But Ravan, there's a condition. I want you to take this lingam home, hold it in your hand, but you cannot put it down. And if you put it down, it will stay there and it will not move. You will not be able to move it anymore. This reminds me of a little story in Kishkindakand. When Sampati, the bird, the brother of Jatayu, told Ram Bhagwan, who is qualified to go to Lanka? There were two qualities. The first quality is that person must be able to leap across 800 miles and come back. First quality. Or dusra quality hai, that person needs to be a lover of Ram. Because you can't serve Bhagwan and serve the Lord without love. Two qualities. He must be able to go and come back. And second quality, he must be a lover of Ram. And the only one who could do that was Hanumanji. So I'm telling you today, whatever you do in life, you have to do it with love, otherwise don't do it. If you cannot do it with love, don't do it, because it will be reflected, your mind is reflected in your work. Whatever you do, it reflects your state of mind. Whatever you do, it reflects whether you love doing it or you just show up there. Whatever you do, you're in a relationship, give lovingly. Right? You serve a community, serve with love. Pyar se. You're at your work, go to work with love. You're speaking to someone, speak with love. There are times when you kabhi komal hata prabhu ka, kabhi bhojal hata prabhu ka. Sometimes you have to be stern, but you don't have to be hateful about it. Right? Bhagwan Shivji says, Ravan, the only way is that you must go, take it straight home, don't stop. But Ravana, what happened to him? What happened to him now? Asina mutrot sarkamo margo hi shivamayaya tatstabhityum tashuktorya bhutyo lasya Ravana Prabhu. Ravana held the lingam in his hand. And the Lord knows well that if Ravan is successful in taking this lingam home, that it will be the most powerful thing he did. So the Lord's illusion came, and Ravan had a desire, his senses, he got back his head, by the way, and the desire took hold of him, and he made a stop to put that lingam down, to fulfill some sensual desires. And what happened? That lingam he could not hold, he could not lift that lingam back again. Drishtekam tatrave gopam pratyarcham linga dadotayat. And so he found a cowherd there, somebody, taking care of the cows. And he said, you take care of this linga, because I cannot take it. I cannot take it over. But this lingam, tatreva tatsthitam lingam, vrajasara samadbhavam, sarvakam pradam chaiva, darshanat papaharakam. This lingam, Shivji Bhagwan tells us here, this lingam is made of the essence of Bhagwan Shivji. This lingam could bestow all desires and can remove the sins from our lives with merely looking at it. This is called darshan. When you come to this temple, even if you don't get a chance to sing, to talk, to offer milk, to pray, if you just have a darshan of the Lord, if that Murti is preserved properly, then your eyes become purified, your body becomes purified, your karmas become purified just by having a glimpse. And so Bhagwan Shivji says, Vaidyanatheshwaram namna talingam avabhanmune prasiddha trishu lokeshu bhuktim muktim pradam satam. This particular linga will be known by the name of Vaidyanatheshwar, Vaidyanatha Bhagwan.
Vaidya, the Lord who heals our sicknesses and our sorrows. It bestows devotion, prasiddham trishulokeshu bhuktim muktim pradamta satam. It bestows devotion as well as salvation to our devotees. This excellent lingam will be called Jyotirlingam. Jyotirlingam idam shreshta darshanatma pujanadapi sarva papaharam divyam muktir bandhana muktitam. This excellent lingam of Bhagwan Shivji will be called a Jyotirlingam. Why? Because Brahmaji and Vishnuji came from the heavens and they did the installation of that lingam when it was there. It removes of sins for those who look at him and who adore the Lord. It is beneficial to all in the heavens, on earth and elsewhere. When Ravana, of course, left that lingam there, my friends, he left it as a blessing to all. Vaidyanath Bhagwan, that lingam is facing, of course, Ravan where he was. And from that day, my friends, that lingam was known as Vaidyanath Bhagwan. Afterwards, Narada heard about this lingam and he went to Ravan and he says, Ravan, tell me what you have done to deserve the blessings of Shivji. Ravan told him the whole thing, and Narada from that day brought this word. What is the word? We can win Shiva. We will win Shivji. The Lord will manifest himself in front of us in some form, only when we are willing to give up everything. When I say give up everything, your organs, your senses, your sense action, your and so on, these things are important in life for you to live. For survival, it is important. But it is not important, my friends, when you stand in front of the Lord. Please remember that as much as we offer bananas and everything that you will offer just now, offer yourself to God. Controlling our senses, controlling our actions, our speech, our mind and our thought, when these are all controlled, then Shivji Bhagwan takes control over us. Prem se bolo Shankar Bhagavan ki. And to conclude, Ravana, of course, now takes the oath that he is going to use his power. You know, Narad says, I want you to go, and you see that Shivji, he's powerful. Go and shake up Kailash. When you go and shake up Kailash, Shivji will become afraid of you. Sometimes we do not understand the power of something called gratefulness. To those who have given, to Bhagwan who has given us something, or to those who have provided us with some means of life, we should be grateful to them. Ravan went and he shook Kailash up. And you know the story, Shivji Bhagwan crushed his hands. And Mahadev told him, Re re Ravana durbhukta va garvam vahi durmate shighram cha tava hastanam darpanascha bhaveddiha. O Ravan, O evil-minded, O degraded one, a devotee should never be proud. Re re Ravan durbhukta yah garva va durmate. A devotee should never be proud of their accomplishments. If Bhagwan has blessed you, be thankful for it. If Bhagwan has given you, show your gratefulness for that. Shighram cha tava hastanam. And you have proven your ungratefulness to me. That soon a person will come who will remove the arrogance of strength from your arms. Soon a person will come who will remove the arrogance of strength from your arms. That person will be born on this earth. And that, of course, is Narayan himself, Bhagwan Sri Ram. It was then, of course, that Ramji's avatar came into this world. To summarize, my friends, what we have learned today, your lingam that you have at home, please give your devotion to it. Please pray to your lingam. Offer a little dhar on your lingam. Chant Om Namah Shivaya. Play the stotras if you cannot chant them. Saurastre Somanatam Ja. And then what happens? When Shivji Bhagwan takes over
your life. He is in control. No one else is in control. This is the message you're leaving with today. Somebody asks you, who is in charge? Who is in charge? Not you, not anyone else is in charge. Bhagwan Mahadev is in charge at all times. Prem se bolo Shankar Bhagwan ki, कि मेरा भोला है रंग रंगीला, कि अमृत बरसेगा, कि अमृत बरसेगा श्रावण में. My Lord है भोला रंगीला. And when I sing in this month of Shraavan, the Lord will bless all of you. Now, we're going to hear the Chandra Shekhar Ashtakam by the children. They're going to sing for us and ask Bhagwan Shankar to bless all our ancestors. This is the time when I urge all of you to, if you can, think of the near and dear ones who you have lost in life and ask Bhagwan Shankar's blessings to be upon all of them. Bole Shankar Bhagavan ki Jai. Chandrasekhar, Chandrasekhar, Chandrasekhar Pahiva. Chandrasekhar, Chandrasekhar, Chandrasekhar Rakshama. Ratna Saru Sharasanam Rajatadisham Veniketanam Sinjanekrit Pannageshwar Ashrutanal Sayakam Shri Pradat Purat
भेषजं भवरोगिणम् अखिलपादमामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं मुक्तिफलप्रदं सकलागसङ्गनिवारणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै नमः चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर रक्ष मां विश्वेशं माधवं धुन्धिं दन्दपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुह्यां गङ्गा भवानी मणिकर्णिका। बोल चंद्रशेखर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। Pray that all of you continue to get the blessings of your beloved ones who have passed on, and may you always stay close to them even though they are distant. We want to thank our sponsors today. So happy to see so many sponsors coming in. Virtually today we have Nandrani Singh, Babita, no, yeah, Babita. Nandrani Singh, Bhagwati Mata's blessings and Bhagwanji's blessings on you always. Happy birthday to Nilwanti Budu. She's here celebrating birthday. Happy birthday to you, and may Bhagwan Bholenath Bhagwan always give you blessings and abundance. Virtual happy birthday and anniversary to Joan and Brahm Shivnath. May Bhagwan's blessings be on you, Joan and Brahm Shivnath, as you celebrate two things simultaneously. And also virtual happy birthday today to my father-in-law in Guyana, Sita's dad. Today he's celebrating his 70th birthday. And congratulations, Dad, and happy birthday from, of course, all of us, including your grandkids. We wish you long life, health, and happiness. Sincere thanks to all our in-person sponsors. As well, I will call them just now, but our Bhojan today is sponsored by Auntie Lalita and Uncle Bhims as well. Thank you so much. Bhagwan's blessings on you. Bhojan is also sponsored by Sister Oma, who's here with us today. Bhagwan's blessings on you, Sister Oma. And also by Kishar and Samantha Mangru, who are celebrating something special today. May Bhagwan bless all of them. There's an important time. Bhojan is something very important to sponsor in our life. When you can fill the stomachs of someone, you know, it's an important thing. At this temple, we cook lots of bhojan all year, including Shraavan. So Bhagwan's blessings to all of you who have contributed. Please continue to, because it helps the temple and it also helps you to elevate. Our in-person sponsor today, Dara and Lakshmi Rajpal and their family. Bhagwan's blessings on them and their entire family for always being here in service to Sanatan Dharma. And also today, our in-person sponsor, Keshar and Samantha Mangru, also not forgetting their son, little Charandat. Today, 2 years ago, I performed in this very temple a beautiful wedding ceremony. There he is. A beautiful wedding ceremony for this lovely couple. And today they are celebrating, on this day they are celebrating their second wedding anniversary. Please give them a big round of applause. And Bhagwanji has blessed them, has given them another blessing in their life in the form of their son, Charandat Mangru, who knows when you're talking about him because he always responds. So Bhagwan's blessings to both of you, Keshar and Samantha, and also on your son.
Bole Shankar Bhagavan ki Jai. Everyone will offer prasad now to the Lord. We'll have 2 lines coming up, one to the Shiva and Parvati Mata. Bhojan today, by the way, is cooked by, hold on, let me give you this one now. Bhojan is cooked today by Pandit Shekhar. All you Pandit Shekhar, he's prepared some beautiful mixed veggie and he prepared the dal as well. So when you eat the dal and the mixed veggie, that is the blessed hands of Brahman Pandit, Pandit Shekhar. And of course, Bhaiji Umesh cooked the rice and the bhaji. We have nice jalebi for everybody today. Now you know what's on the menu. So please hurry up with the parsa so you can have your bhojan. Bole Shankar Bhagavan ki Jai. Chandrasekharaya Namah, Chandrasekharaya Namah, Gangadharaya Namah, Gangadharaya Namah, Chandrasekharaya Namah, Chandrasekharaya Gangadharaya Namah
Shankar Bhagavan ki. Reminder that every evening there is Abhishekam at the temple, 6 p.m. Any evening you can come, including tomorrow evening, Tuesday, Wednesday, Thursday. And there's Abhishekam happening here and prayers and so afterwards. So please come on out in the month of Shraavan. Also a reminder that as of August 1st, from August 1st to August 29th, every evening there'll be satsang here, reading of Shiv Puran Katha of Bhagwan Shivji. I'll be here sitting just like we always do, from August 1st to the 29th in the month of Shraavan. Our Bhagavad Katha starts, our 7-day Bhagavad starts on August 30th to September 5th. We're trying to do it outside this year. It would be nice, but we'll see how things go. And also on the long weekend, August 7th, we have Ekadash Rudram Havan here, where the Rudram of the Lord will be chanted for 11 times, and we'd like to have 11 families, as we always do, from 1 p.m. on the Monday to in the evening. So please, everything is online, bhawanishankarmandir.com/Shraavan. Go and reserve whatever you need to. God blessings to all of you. Please let us stand now for Aarti, please. Om Yani Kani Chapapani Janamantar Kritani Chan Tani Sarvani Nashyantu Pradakshanam Pade Pade. Om Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Jai Shiva Omkara Swami Hare Shiva Omkara Brahma Vishnu Sada Shiva Brahma Vishnu Sada Shiva Hare Dange Dhara
अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणि सर्वसार्थिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियवर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, विघ्न विनायक गणपति भगवान की, लक्ष्मी मैया की, दुर्गा मात की, सरस्वती मैया की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्यदेव भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, सूर्यादि समस्त नवग्रह देवताओं की, संध्या सैनम आरती की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सुशान्तिर्भवतु। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।